Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome back to my channel. ये रमज़ान का व्लॉग ही है एंड मैं यहाँ पे समोसे की फिलिंग बना रही थी. एक्चुअली मैं अपना ट्राइपॉड चेक कर रही थी द एंगल वगैरह ताकि मैं फ्यूचर में वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई हैं रेसिपीज़ शेयर करने के लिए. तो बस मैं वही ट्राई कर रही थी. I think like most of us, I make ginger garlic paste at home and मैं वही यहाँ पे ऐड कर रही थी after the onion had got a little bit translucent. फिर इसे अच्छे से मिक्स करके स्मेल जाने तक अच्छे से कुक कर लिया. After that I added minced chicken जो मैंने खुद से mince किया है. I added that and I let it cook for a while before adding masalas. Then इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला था so that the smell goes away. Then I added salt as per the taste. और इस सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड ऑयल अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. मैंने सनफ्लावर ऑयल डाला था 2 tablespoons. Now to this I'm adding finely chopped chilies. I've taken about 2 to 3 chilies which are small sized. This is almost cooked and now I am adding dhania to it to give it final touches. Yummy thana. Then I have taken oil in a kadai and here I am showing you the sweets के जो samosa patties आते हैं ना वो जो मैं use करती हूँ. Dish I've taken a little bit of maida and I'm adding water to it. इसका मैं घोल बना लूँगी ताकि जो पैटी होती है ना उसको सील करने के लिए this will act as a gum. मैंने घोल बना लिया है एंड आई हैव केप्ट इट दिस कंसिस्टेंसी. तो अभी मैं समोसे के जो फिलिंग है वो करने के लिए रेडी हो गई हूँ एंड दिस इज़ हाउ आई एम स्टिकिंग इट जस्ट टू शो यू हाउ आई डू इट. एंड आई पुट एज मच एज filling that I require, and then again I will seal it properly and then fry them. So ऐसे ही मैं सब बना के रख लूँगी फर्स्ट, फिर उसको बाद में फ्राई कर लूँगी, तब तक ऑयल भी हीट हो जाएगा. तो मैं इसी तरह से सारे समोसे फ्राई कर लूँगी. एंड आज इफ्तारी में बहुत सिंपल था. मैं सिर्फ शरबत और समोसा बनाई थी. तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो रहा था तो मैं बैठ गई थी दुआ मांगने के लिए. बस मैं आपको बाद में मिलती हूँ. Hey guys, assalamu alaikum. I hope you are doing well. Inshallah, this is your girl Said. इफ्तारी की तैयारी के बाद मैं अभी मिल रही हूँ एंड मैं एक क्विक शावर लेके आई हूँ and I'm dressed. It's not a night suit, this is a kurta that I purchased from the local market. I will show you guys in a minute. But I have gotten ready because we're going to the airport and we are going to airport to pick my cousin sister, that is my मासी, जिनको आपने बहुत ब्लॉग्स में देखा होगा. उनकी बेटी को हम पिक करने जा रहे हैं. So she's coming back from Canada for a 1 month stay and she's coming after 3 years. So we are going to welcome her and go to the airport. So that's why I've gotten ready. And this is a very comfortable kurta and I've just taken a shower and I'm sweating like crazy. I don't know किस किस के साथ ये होता है, but मेरे साथ ये होता है कि मैं जब भी shower लेके आती हूँ I sweat a lot. I need to like cool myself in the fridge. That is the level of hotness I feel. So yes, I want to just go ahead and cool off, and I've taken the shower in time and I couldn't find a cardboard or anything. Last minute plan to go and meet her
सो आई डिडंट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग बिकॉज एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि संडे को आ रही है फ्लाइट, मतलब मंडे मॉर्निंग एट 2 a.m., बट इट्स actually at Tuesday. So if it was at Sunday, we would have, I would have prepared myself, but then I thought it's a working day, so my husband might not be free, and that's why I didn't, do anything as such. And my husband was like, let's go, no worries. So yes, so जुगाड़ करते हैं हम लोग हमेशा की तरह. So I made this sign, welcome home Amy Paji. Her name is Ayman and we call her Amy Paji. So and then I've written here Canada return. So I've just made a simple kind of a some box, Amazon का जो भी box था उसी में मैंने बना लिया, ऐसे मैं पकड़ के खड़ी हो जाऊँगी वहाँ पे. And yes, that's what I wanted to update you guys about. And once we are heading, I will take you guys along with me. I've also ordered a cake. I will show you guys later on. I've not opened the package, like the seal, the tape जो लगता है ना, वो नहीं ओपन किया अभी तक, बिकॉज वहाँ पे जाके ओपन करेंगे. एयर जाने की वजह से ख़राब ना हो जाए केक, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज उसको फिर से रीटेप करना पड़ेगा. एंड आई थॉट मैं वहीं पे जाके चेक कर लूँगी. Any which ways, I have blabbered on and on and on and on, and let me just go ahead and take care of my skin. Just first I will cool off because कुछ लगाने का फ़ायदा नहीं है. As you can see, I'm sweating profusely. So I'll cool off and then I'll do my skincare. I wanted to give you guys a update. फिर last minute में ये होता है कि मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, फिर मुझे voice over करना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा थम जम हो जाता है. So yes, that's about it. I've eaten 3 minutes. I don't know how long the vlog is going to be, but this is how my outfit looks like. I've worn a jeans and I've worn this kurta. Then I'm going to pair it with a dupatta. So I'm going to do a hijab and go. So I'll show you the dupatta when I wear it. So that's a ओके गाइस, जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए तो इफ्तियारी के लिए हमारे लिए भी खाना रखा था एंड वी जस्ट हैड यमी यमी फूड इवन देयर, सो हमारी डबल इफ्तियारी हो गई. So guys, we are in the car with the food, and this is my masi, and we are headed to the airport. We are filling petrol right now and we'll be on our way. So I'll catch you guys at the airport. तो हम लोग ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच ही गए थे एंड द रीज़न वाई वी टुक फूड इज़ बिकॉज़ उनकी फ़्लाइट अराउंड 4:30 इश आ रही थी एंड वापस आते सहरी का टाइम हो जाता, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि एयरपोर्ट में ही सहरी कर लेंगे. एंड एयरपोर्ट में ऐसा कुछ हैवी खाना तो नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग घर से बिरयानी पैक करके लेके गए थे एंड दिस इज़ अस वेटिंग. We are at the airport. We are late. जो पकड़ते हैं सेंटी एक बॉटल है भी की. हम लोग ऑन टाइम पहुंचे थे बट उनकी फ़्लाइट हाफ एन आवर पहले आ गई थी, तो शी हैड क्लियर्ड कल तो बेबी कस्टम्स एंड फ्री. शी वाज आउटसाइड बिकॉज शी वाज वेटिंग आउटसाइड. वी गॉट आवरसेल्व्स ड्रॉप नियर द कैब्स एंड अंकल गए थे पार्किंग करने व्हाइल वी वेंट टू पिक हर अप बिकॉज शी वाज ऑलरेडी वेटिंग एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड हर. देयर शी इज. टन टन टन. अस्सलाम वालेकुम. फिर मिलने मिलाने के बाद हम लोग बिरयानी खा लिए क्योंकि 5 o'clock तक ही टाइम था एंड हम वहीं पे जहाँ जगह मिली वहीं पे बैठ के हम लोगों ने खाना खा लिया. वेलकम होम. Welcome to India. कनाडा वाले. Canada returns. हेलो बच्ची को. ओ बच्ची. अच्छा है. अच्छा है. तो मैंने रसमलाई केक लिया था जो कि थोड़ा स्क्वॉश होके आया, बट इट डिफरेंट वाज है नहीं. रियली टेस्टी. एंड ये है बैंगलोर का एयरपोर्ट. इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. मैं बस आपको वही दिखा रही थी. I think this is a new exhibit that they've put. It's all about cactus, succulents, and everything. So I just thought it, like I should share it with you guys.
So yes, I enjoy this video and I hope you guys enjoy this vlog. I tried to film as much as I can. I feel of all the vlogs that I've done, this was the most successful one that I've done so far. So बस क्या था कि इसके बाद हम लोग घर चले गए, लाइक ऑलमोस्ट 6 o'clock हो रहे थे, 5:30 हो रहे थे सॉरी, एंड हम लोग घर निकल गए थे क्योंकि नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो हमें नमाज पढ़नी थी, तो फिर हम लोग निकल गए. Yes, you guys, this is it for the vlog. I will see you guys in the next one. Till then, you guys take care. Bye.